अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है और स्लाइड नजर आ रही है। पिछला वाला हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जब तक लोग आए ज्वाइन करें। कैन यू कंफर्म दैट the sound and is clear and as well as the slides are visible? अस्सलाम वालेकुम सर। लॉग इन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, दो तीन लोगों को नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो अच्छा, थोड़ा सा जरा 2-3 मिनट के बाद या स्टार्ट कीजिएगा सर क्लास। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
सर मेरे ख्याल से 10 पार्टिसिपेंट्स हो गए, स्टार्ट कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी सर, आना शुरू हो गई। जी सर अब आई है। Okay, so I was discussing that there are certain defense mechanism which are uh, in order to decrease our central stresses. मिसाल के तौर पर हम दिन भर में ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कोई मकसद होता नहीं है, लेकिन दे आर रियली सोर्स ऑफ डिक्रीजिंग सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने नहीं देखा, तो हम उधर उधर देखने लगते हैं और पेंट की जेब में हम हाथ डालने की कोशिश करते हैं, विच इज इनअप्रोप्रिएट। हालांकि कसूर तो सामने वाले का था, लेकिन हम ऐसा महसूस होते हैं, एम्बैरेसमेंट फील होती है। There are certain pathological defense mechanisms such as denial, distortion and splitting. और ये डिनाइल से मुराद ये है कि ओवरऑल जैसे पाकिस्तान हमारे महकमों से सब जाती हैं कि एवरीथिंग इज ओके, जबकि मैं मुल्क डूब रहा है, तो ये डिनाइल है। या एक बंदा होता है वो कैंसर में मुब्तला है, लेकिन बिहेवियर ऐसे कर रहा होगा जैसे मुझे कुछ नहीं है, आप लोग क्यों परेशान है। ऑन द अदर हैंड, ये हायर ऑर्डर और म्यूचुअल डिफेंस मैकेनिज्म जो कि सोसाइटी उसको अच्छा समझती है, जैसे मिसाल के तौर पर altruism, ये मदर टेरेसा या सतारी दी वर कंसिडर्ड हाईली altruistic person.
और ये हमने थोड़ा सा उसको उर्दू में बनाने की कोशिश की है कि जो है डिनाइल की उर्दू है इनकार या रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देना। प्रोजेक्शन इज बेसिकली पैरानाया इसमें डेवलप होता है कि सास जो है कहेंगी कि मेरी बहू ठीक नहीं है, या बहू कहती है कि सास मेरे उसके ऊपर प्रोजेक्ट करती है, अपना कसूर नहीं वो समझते हैं। तो हमने ये मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज्म इसमें हमने वो किए। फिर उसके बाद में ब्रेकिंग बैड न्यूज में कहा था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये था कि देर आर सर्टेन इलनेसेस, फॉर एग्जांपल HIV या इनफर्टिलिटी या एपिलेप्सी, या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, या उसके घर वालों को, या कोविड के बारे में बता रहे हैं, तो वो ज़रूरी है कि उसके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए उसको। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें, पहले तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग करें। और उसके अंदर ज़रूरी है कि एक तरीक़ाकार हमने बताया था कि जब भी कोई तो व्हाट आर द कुड बी द रिएक्शन ऑफ पर्सन विद शेयरिंग ए डायग्नोसिस। तो उसमें ये देखा गया है कि 54% ऑफ पीपल आर शॉक्ड एंड 46 आर फ्राइटेंड। तो उसके हमने 5 मॉडल बताए कि नॉन डिस्क्लोज, उसको बताया ही नहीं, जहाँ हमारे यहाँ कहते हैं इसको बताओ ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो दैट इज डेंजरस। वो इंसेंस की उसकी वजह से फिर बड़े मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। जैसे बेटा फेल हो गया तो बताएंगे नहीं, या माँ उसकी बताएगी नहीं। और दूसरा ये कि पैटर्नलाइजिंग डिस्क्लोजर है, फुल डिस्क्लोजर, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर है, और बायोसाइकोसोशल। और हमने कहा था कि सबसे अच्छा जो है बायोसाइकोसोशल है। इसके 6 हमने बताए थे कि स्टेप्स हैं, स्टेप्स स्पाई के नाम से, यानी सीटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग कैसे हो, पेशेंट की परसेप्शन क्या है, और इनवाइट करें उसे कि वो क्या समझ रहे हैं एपिलेप्सी को, फिर उसकी नॉलेज, फिर उसकी एम्पैथी कि हाँ उसकी जगह पे रहकर सोचें, और समराइज प्लान ऑफ एक्शन कि अब ये हमने करना क्या है। ये हमने ये बताए थे। और उसमें खास तौर पर बताया था कि देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स में ये कि इंटरप्शन ना हो, एजम्पशन ना हो कि बस मैं समझ लिया कि वो ठीक है, एंड ब्लंट एक्सपोजर भी नहीं हो कि आपने कह दिया कि अभी एक्सरे में ये आया है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी अवॉइड करनी चाहिए, और होप को बरकरार रखना है, और डोंट इग्नोर पेशेंट्स परसेप्शन। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे लास्ट टाइम। हम आज फिर, और फिर खास तौर पर हमने एक चीज ये बताई थी कि हमारे मुल्क के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से काम करना। यूरोपियन मॉडल में ये एक्सेप्टेबल है कि आप अपोजिट सेक्स के कंधे पे हाथ रखें या उसके हाथ पकड़ लें, लेकिन हमारे मुल्क में दिस इनअप्रोप्रिएट। हाँ, अलबत्ता ये है कि जुबानी हद तक बेटा बेटी या उसको अम्मा या वो कहना बुरा नहीं है, जो कि यूरोपियन मॉडल में इसको अच्छा नहीं समझते। ओके, सो अब हम नई चीज, अच्छा ये चैट में देखूं क्या है। अब हम कोशिश करते हैं कि नई चीज हम वो कर लें, जो आज की स्लाइड विजिबल है। स्लाइड्स आर विजिबल। ओके, कैन एनीबडी कंफर्म के हाँ ये विजिबल है स्लाइड्स? जी सर, विजिबल है। ओके, so there are 3 topics we will be discussing. First is pain, then sleep and consciousness. तो पेन की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बताएंगे किस तरीके से होता है। तो पेन इज बेसिकली it is defined as unpleasant sensory or emotional experience associated with actual or potential tissue damage। क्या अभी पोटेंशियल देर इम्कान है कि आपने हाथ मोड़ा, उसका जो है और टिश्यू डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से इम्कान था कि वो डैमेज हो जाता। और the other definition, it is a subjective and entirely individual personal experience and influenced by learning, context and multiple psychosocial variables। ये भी ये 2 डेफिनेशन पेन के हैं, एंड दे आर क्लासिफाइड कि एक्यूट पेन है, क्रॉनिक है,
acute and chronic on acute on chronic pain. Acute जो less than 3 months से हो, chronic ये है जो more than 3 months, और acute on chronic is that ये कि acute superimpose on the underlying chronic pain. अच्छा, उसके these are the various the physiology जो है उसके types क्या हैं? Nociceptive, inflammatory, neuropathic, and non-inflammatory or non-neuropathic. So these are the nociceptive or noxious peripheral stimuli, and strain or sprain are the example or bone fracture. While inflammatories are the example are osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and tendinitis. Neuropathic pain जो peripheral nerve damage की वजह से होती है, उसमें diabetes में peripheral neuropathy बहुत होती है, and इसी तरह post hepatic और HIV related polyneuropathy. In non-inflammatory or non-neuropathic are abnormal central processing and no known tissue or nerve damage, like for example fibromyalgia or irritable bowel syndrome. Fibromyalgia is basically pain in a certain group of illness which are not explained on the intervention and current knowledge of physiology and anatomy and pathology. So the essential of successful treatment of pain are underlying pain through the eyes of the patient. Understand pain through the eyes of patient. जो भी patient है, patient may not be suffering from disease, but he or she is at dis-ease. He or she is not at ease. So therefore, listening to that properly and showing empathy, जो मैंने अपने जना में जब मैदे वाले मरीज को आते थे, तो वो जैसी GIT के डॉक्टर के पास जाते थे, तो जैसी पेन का शिकायत की मैदे की एंडोस्कोपी, हम उसको कहते थे मुझे बताएं ये दर्द जो है सुबह में होता है, शाम में होता है, भारीपन है, जलन है, मरोड़ है, खट्टे डकार तो नहीं आते। तो वो मरीज जब वेंटिलेट करता था तो हमारे साथ सेशन में गुजारने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता, उसको कहते हैं कि ये वेंटिलेट हो जाता। And take time for comprehensive pain assessment, and that include history और physical examination. History पूछना बड़ा जरूरी है कि कैसे शुरू हुआ, relieving factor क्या है और aggravating factor क्या है, और फिर ये है कि उसकी physical examination is also important कि बताया, ताकि हमें symptom के साथ sign नजर आए. I remember one of my friend who इस्लामाबाद में थे, इंजीनियर, उसने मुझे फोन किया कि मेरी बेटी को जो है वो अपेंडिसाइटिस से ऑपरेट करने ले जा रहे हैं। तो मैं उसी वक्त एयरपोर्ट से उतरा था, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ वहीं। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने उसका रिबाउंड फिनोमेना चेक किया, स्वाश टेस्ट किया, बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने क्या सर्जन को बुलाया कि इसको ऑपरेट ना करें, इसमें कोई मुझे तो नजर सिम्टम तो हैं, इसने पढ़ा होगा लेकिन साइन नहीं है। तो उसके बाद में वो अभी भी ठीक है, बच्ची जो है, कोई ऑपरेशन की जरूरत पेश नहीं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन विल elicit the signs. वो सिम्टम वो हैं जो मरीज बताए, साइन वो हैं जो कि उसकी वजह से एविडेंस हो। इसी तरह से प्रीवियस ट्रीटमेंट, खास तौर पर जो है इसमें डॉक्टरों को पूछना चाहिए कि हकीम होम्योपैथी और दूसरी दवाइयाँ साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये बताना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर लोग जो है ये ग्रेप फ्रूट खाते हैं, उसको ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ उसकी इंटरेक्शन है। साइकोसोशल कंसर्न और पास्ट पेन हिस्ट्री, comorbidities, family history of addiction on pain challenges. Listen for common misconception about pain. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग जो है वो कार्डियो कॉन्शियस है, थोड़ा सा पेन हाथ में हुआ, उस उम्र में यंग फिटफाट बैठा है, कह रहा है नहीं मुझे कार्डियक प्रॉब्लम। और खासतौर पर जो मरीज ऐसे आते हैं दिल के साथ कि हाँ यहाँ दर्द है, तो एक मरीज तो यह है कि उल्टे साइड सीधे साइड पे हाथ रख के मेरे दिल में दर्द है, उसको समझाया गया कि दिल इधर नहीं होता, दिल इधर होता। तो दैट इज मिसकॉन्सेप्शन अबाउट वेरियस थिंग। और ये गर्म दवाइयों का असर था या ये था। एंड एंगेज पेशेंट इन डेवलपिंग पेन ट्रीटमेंट प्लान। सबसे अहम बात यह है कि वी हैव टू इन्वॉल्व द पेशेंट एंड देयर केयर गिवर कि हम मिलके इसका इलाज करेंगे।
and ask the patient about personal recovery goal कि उसकी recovery goal क्या है, उसको सिर्फ पेन से हटना है या उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि काम करे. So these are the multi-modal treatment option. इसमें अगर आप देखें कि फार्माकोथेरेपी ऊपर है, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज है दैट लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच इंक्लूड एक्सरसाइज एंड वेट लॉस. एक्सरसाइज क्या करेगा, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे जिस्म में एड्रेनलिन खारिज होते हैं जो एंजाइटी ठीक करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं व्हिच आर नेचुरल ओपियम व्हिच आर पेन किलर. नंबर 3, एनकेफिलिन रिलीज होते हैं व्हिच आर बेसिकली मूड को हशाश बशाश करते हैं, हैप्पी हार्मोन. और इसके साथ साथ BDNF रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, व्हिच आर बेसिकली एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी भी है, एंटी डिमेंशिया एक्टिविटी भी है और फ्रेश भी रखता है. तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी लाइफस्टाइल को ठीक करें, कि वो नींद पूरा सोए और खाना मुनासिब खाए और वर्जिश करे, काम करे, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज थेरेपी. फिर हम इसके साथ साथ ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का रिवाज बड़ा ज्यादा है. मिसाल के तौर पर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में मसाज है, सप्लीमेंट्स हैं. ये मिसाल के तौर पर ये जो हल्दी और इस किस्म की चीजों में वाकई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है. फिर इसके साथ साथ भी ऑल्सो एडवाइज फिजियोथेरेपी ऑन रिहेबिलिटेशन. उसके बाद फार्माकोथेरेपी. ऑल्टो क्या है, दिस इज अमेरिकन लीडिंग डिजिटल फार्मेसी. तो इसके अंदर जो ऑल्टो के नाम से है जो कि डिलीवरी करती है, और वो नॉन ओपियाइड जो हैं, नॉन नारकोटिक, वो दवाइयों का इस्तेमाल जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है वो है. फिर इंटरवेंशन अप्रोच कैन बी इंजेक्शन और न्यूरोस्टिमुलेंट. आजकल ये बहुत ज्यादा आ रही है कि वो न्यूरोस्टिमुलेंट मिलते हैं जो कि पेन को वो कम कर देते हैं. एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप के आम मिलके जो है, मिग्रेन ग्रुप हो गया या शियाटिका ग्रुप हो गया या जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ग्रुप हो गया, तो ऐसे ग्रुप बनाते हैं लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप. हमने भी अपने हॉस्पिटल में ये शुरू किया है कि हर संडे को जो है केयर गिवर ग्रुप जो है वो मिसाल के बाइपोलर ग्रुप, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन, एडिक्शन के ग्रुप. ये पहला हिस्सा. देन कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं कि होश आवाज. In the brain, this is the brain state in which person is being aware of the self and surrounding. तो अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द के बारे में आगाही जो है, that is consciousness. It is a product of electrical activity of the brain. और अनकॉन्शियसनेस में फिर EEG फ्लैट हो जाती है, और दिमाग में जिस तरह दिल में ECG होती है, दिमाग में EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होती है, जो कि हमें मुख्तलिफ स्टाइल से बताती है कि दिमाग जो है वो कॉन्शियस है. एंड देयर आर 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. फर्स्ट जो है नॉर्मल कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ नॉर्मल अराउजल और अवेक एंड अवेयर ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग. दिस इज द नॉर्मल कॉन्शियसनेस. Then the clouding of consciousness, a person consciously but mentally confused hota hai, called clouding of consciousness. In the case of drug or alcohol intoxication or high grade fever, malaria, septicemia and so on, इसमें clouding of consciousness होती है कि पूरी तरह उसको आगाही नहीं होती. Then the third is sleep. Sleep is a person unconscious in relation to the external world and surrounding, but it is arousable. यानी उसको the person can be aroused, while in coma you cannot arouse the person. The person is unconscious and not arousable. ये सारे इसके 4 वो हैं लेवल्स हैं. तो इसमें सबसे जो कम लेवल का है वो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, and coma is this seriousness. The brain structure involved in the conscious state are first of all brain stem or reticular formation. ये reticular formation, इसके बाद में thalamus, hypothalamus, ascending project pathway, widespread area and the cerebral cortex. So these are the question, and BCQ can come
कि what are the structure that are related to conscious state. तो हो सकता है इसमें इनमें से एक डला हो जो सही जवाब होगा और बाकी कुछ और रखा हो कि सेरेबेलम रखा हो या जो है कुछ और लिखा हो. तो the temperature function like light and its effect on the circadian rhythm. अच्छा ये भी this is very important कि स्लीप वेक साइकिल जो है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, पाइनल ग्लैंड भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, उसकी खुराक सूरज की रोशनी में वो अपना काम बंद कर देती है और रात को जब धूप अंधेरा होता है तो उससे फिर नींद आने लगती है. तो ये एक रिसर्च से साबित हुआ है कि इवनिंग में अगर आप सूरज की रोशनी में वॉक करेंगे तो सूरज की रोशनी आंखों के थ्रू पाइनल ग्लैंड तक जाएगी, जिसकी वजह से आपका सर्केडियन सर्कल जो है वो ठीक हो जाएगा, रात को नींद आएगी, दिन जागेंगे. This is one of the strategy to physiological strategy to improve good and healthy sleep. The reticular formation, you all know that is a set of interconnected nuclei. They are located throughout the brain stem. The brain stem में क्या क्या आता है? Pons, midbrain, upper medulla, and the thalamus. The thalamus ये सारी जो है interconnection होती है. And its role in behavioral arousal, role in consciousness, sleep and sleep wake cycle, connect the brain to the cerebral cortex. So it consists of three parts. Three parts कौन-कौन से हैं इसके? Lateral reticular formation, paramedial reticular formation, and raphe or median reticular formation. So ये जो है इस पे इस तरह से सवाल आ सकता है कि the reticular formation consists of following part except this one. तो उसमें ये आएगा. Then the thalamus. Thalamus is located in the mid part of this diencephalon. It almost every area of cerebral cortex connect with it. इसके साथ सारी चीजों का ताल्लुक होता है. And these function segments are called thalamocortical sectors, and they are made of thalamocortical fiber or corticothalamic fiber. Cholinergic projection from thalamus are responsible cholinergic activation of the cerebral cortex. Thalamus nuclei to cortex via projection into the reticular formation. और thalamus के नीचे hypothalamus होता है. With the tuberomammillary nucleus in the hypothalamus, which consists of histaminergic neuron project to the cortex, and it is involved in the maintenance of wake state. तो wake state को जो है hypothalamus के through होती है. Now the sensory input to the reticular activating system are, if you look at this slide, कि इसमें हर सब चीजें हैं जो आप अगर देखते हैं कि ascending neural फाइबर्स हैं, डिसेंडिंग हैं, यहाँ से ऊपर इतला जाती है, वहां से नीचे जाती है, जिसमें ऑडिटरी इनपुट मिसाल के तौर पर बंदा अगर सो रहा है तो उसको आपने आवाज दे दी तो इसके थ्रू जाएगा, वो इंटरप्शन करेगा. एंड प्रोजेक्शन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, किसी ने इसका पैर हिला दिया तो वो उसके थ्रू जाएगा. एंड विजुअल, अगर उसको जो है विजुअली स्टिमुलेशन किया गया, लाइट ऑन की गई तो इसके थ्रू आएगा. दीज आर द वेरियस centers which are responsible for the sensory output the reticular active system है. और इसके अंदर on the right side if you see that auditory input or the descending motor nuclei, and then on the left side visual input, reticular formation, ascending, these all are projected into the cerebral cortex, पूरे दिमाग को. तो यहाँ से जो brain stem है, that is very important thing. अगर brain stem में problem हो गया तो person will be unconscious. Now, what are the function of the reticular activating system? So there can be a question. One is regulating sleep-wake transition. That is called जो sleep-wake schedule है.
हमारा स्लीप स्केड्यूल है, if inhibitory area activity increased, reduces the activity of reticular activating system. Less afferent signal to the cerebral cortex sleep. Attention भी करती, sleep schedule को ठीक करती है attention, जिसमें attention में क्या है, reticular activities mediating, और इसके साथ साथ जो है increase region blood flow to the midbrain reticular formation. तो इस तरह 1.1 है, 2.1 and 2.2 जो है, and then third is learning. First था sleep wake schedule, second attention, third is learning. So the reticular activating system is basically a center of balance for other system involved in learning, self-control, inhibition, and motivation. So this is the very important function of the reticular activation system. If somebody is in the class is having a proper function of the reticular activation system, he will have a good learning approach. And when function normally, it provides the neural connection for the processing and learning of information and the ability to pay attention to the correct task selected. If so, this is important because if your reticular activating system is active during your exam, especially of the BCQs, then you can select the correct correct answer. Now the third component is sleep. अब तक अच्छा फिर सवाल जवाब आखिर में करते हैं. So sleep is very important area. It almost 1/3 of our life is spent on this. जिंदगी का एक normally कहते हैं कि 80-90 साल की उम्र में 27 साल हम सोते हैं जिंदगी भर. So basically it is a recurrent altered state of consciousness that occur for sustained period, restoring physical and mental well-being. This is important for us. So therefore, sleep is really an active mechanism, and I have written an editorial on that. That is available on the Google, free of cost. You can download. So we will discuss everything. This is a recurrent altered state of consciousness that occurs for sustained period and restoring physical and mental well-being. So these are the various ages and the recommended sleep. Maybe one is recommended, the other may be appropriate, and the third is not recommended. तो इसमें रेंज दी हुई है. If you look at the कि शुरू के 3 महीने न्यूबॉर्न जिसको हम शीर खार बच्चा कहते हैं, 14 to 17 hours are recommended. Why? Because growth हार्मोन की जरूरत है, जिस्म जो है बनने लगता है. So therefore यहाँ अच्छा यहाँ पे बचपन में तो नींद ज्यादा हो गई और बुढ़ापे में कम हो गई, तो कंपनसेट होके 1/3 लाइफ हो जाती है. और नंबर थर्ड इसमें जो है मे बी 11 to 13 और 18 to 19 तक नॉर्मल है, लेकिन 19 से ज्यादा सोएगा तो दैट इज नॉर्मल. तो इसमें जो है जो नॉट रिकमेंडेड है, लेस देन 11 hours एंड मोर देन 19 hours अगर होगी तो उसमें जो है ये नुकसानदायक है. इसी तरह से अगर आप रेड वाली उस पे चले जाएं कि प्री स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 13 में 9 to 11 hours आर रिक्वायर्ड, जबकि आजकल हमारे बच्चे इतने घंटे नहीं सोते. और 7 to 8 में भी नॉर्मल, लेकिन 12 घंटे में भी अप्रोप्रिएट, बट लेस देन 7 hours एंड मोर देन 12 hours आर नॉट रिकमेंडेड, जो सारा दिन सोते हैं. इसी तरह एडल्ट के लिए, यंग एडल्ट के लिए, इफ यू लुक एट द एज ऑफ 26 to 64, तो उसमें यह है कि 7 to 9 hours आर recommended, highly recommended, maybe 6 hours or 10 hours, but less than 6 hours or more than 10 hours sleep is not recommended. It will be damaging. जैसे आप जरूरत से ज्यादा बिजली हो या जरूरत से ज्यादा आप उसमें मिठास डाल दें, तो या इस तरह से आप
एक दीवार की सीमेंट का रेशो बढ़ा दें वो भी ठीक नहीं। तो ये जो है एडल्ट के अंदर लेस देन 6 आवर इज नॉट रिकमेंडेड एंड मोर देन 10 इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड, while an older adult that's more than 65 years, तो इसमें जो है लेस देन 5 आवर्स भी नहीं होना चाहिए, मोर देन 9 आवर्स भी नहीं होना। ये वही चीज रिपीट की गई है, लेकिन मोस्ट एडल्ट नीड्स 7.5 से 8 घंटे टू फंक्शन वेल एंड अबाउट 10% रिक्वायर लेस और मोर स्लीप। ये 90% लोगों की ये स्लीप की खुराक 7.5 से 8 घंटे। प्रेग्नेंट वुमेन में नीड मोर स्लीप, so therefore the question can arise कि the following of the condition require higher sleep, उसमें फिर आप pregnancy is one of the answer। तो अभी तक जो करंट वो दिखाई गई है कि इसमें हमारे यहाँ आजकल जो लोग सो रहे हैं वो ये दिखाया गया है नीचे वाले उसमें कि 8 घंटे या इससे ज्यादा 35% लोग 1998 में सोते थे, 1998 में, और 2005 में देखा गया है कि 26% लोग सोते हैं। और अभी की जो मौजूदा कोई अगर कोई इस पे रिसर्च करे तो ये फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ स्लीप। 8 से ज्यादा जो सोते हैं हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि 20% होंगे, और जो लेस देन 6 घंटे सोते हैं वो भी कम होंगे। Now, what is the physiology of sleep? Sleep is an active state controlled by a reticular activating system. Previously, it was thought it is a passive mechanism, आराम से आ जाती है। अब कहते हैं नहीं, reticular activating system बाकायदा sleep को promote करती है। It relays stimuli from cortex and peripheral sensory organ, wakefulness and brainstem. The bulbar synchronizing region, ESR, support sleep, release serotonin, and brainstem जो है वो and then work together to control sleep. So the question can be, what are the hormones which are responsible? What are the various neurotransmitters and hormones responsible for sleep? So the answer will be serotonin, dopamine, norepinephrine, and histamine. तो जो एंटीहिस्टामिन जो हम देते हैं तो उसमें फिर ये कि नींद ज्यादा आती है। और मेलाटोनिन एक्टिविटी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेलाटोनिन की जो सेंट्रल एक्टिविटी वो इस तरीके से है कि इफ यू लुक एट द स्लाइड कि आई जो लाइट पड़ती है वो जाके जो सुप्राकाइस्मिक न्यूक्लियस के से होती हुई जो है वो मेलाटोनिन 1, 2 और इस पे वो करके, और इस मेलाटोनिन की वजह से जो है पाइनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और मेलाटोनिन जो है दैट स्पाइनल ग्लैंड की बनता है, और इसकी वजह से जो है पूरा जो सिस्टम है वो स्लीप का जो है बनता है। तो इफ जो खास तौर पर जो लोग जो जेलों में होते हैं या आईसीयू में होते हैं जिनको सूरज की रोशनी नहीं लगती, तो उनमें स्लीप की डिस्टर्बेंस होती है। So the normal human sleep cycle occurs about every 90 minutes. ये इस फिजियोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है। इस पे सवाल आ सकता है कि पहला सवाल ये हो सकता है कि स्लीप साइकिल अकर अबाउट कितने मिनट्स का हो सकता है, तो उसके अंदर ये देखा गया है कि 4 to 6 साइकिल अकर्स पर मेजर स्लीप एपिसोड। जब हम 8 के 9 घंटे सोते हैं तो उसमें 4 से 6 साइकिल आते हैं। तो सबसे पहले जो है नॉन रेम स्लीप है जो कि मेजर कंपोनेंट ऑफ स्लीप है। नॉन
रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम सोते हैं तो ये तकरीबन 70 to 80% ऑफ स्लीप इज कंप्राइजिंग ऑफ non-rapid eye movement sleep, while the rapid eye movement sleeps are 20 to 25%. और होता यह है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में स्लो वेव स्लीप है। अगर हम ईजी लगा दें, स्लो वेव हो गए, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग डिक्रीजेस इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, and body temperature and muscle tone also decreases. And here is very interesting phenomena that stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, 90 मिनट का साइकिल है। और उसके बाद में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप शुरू हो जाती है, जिसके अंदर पूरे जिस्म की एवरी मसल और पैरालाइज एक्सेप्ट एक्स्ट्राकुलर मसल। इसीलिए इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। पैराडॉक्सिकल के बजाय सो रहा है, लेकिन वो जो है आंखें घूम रही हैं, एक्स्ट्राकुलर मसल जो है वो एक्टिव हो गए। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर विच इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप, दैट इज फास्ट वेव स्लीप होती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, मेटाबॉलिक रेट सारा इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्रीमिंग एंड इरेक्शन अकर्स इन दिस कंडीशन। तो जब भी हम असेस करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, ये उससे पूछते हैं, क्योंकि उसमें जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जो है वो जो सारी जो होती हैं अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर हम इसमें ड्रीम देखते हैं और हमारे सारे बाकी जिस्म के मसल पैरालाइज ना हो, तो इधर अगर हम सोते में जम मार रहे हैं तो उधर भी जम मार रहे होंगे, या हाथ चलाते रहते हैं। तो दिस इज वेरी गुड, अल्लाह ने सिस्टम बनाया है। जब हम ड्रीमिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा पूरा मसल के अलावा बाकी सारी पैरालाइज होती है। अच्छा, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली पेशेंट को बताना कि इफ यू वांट टू हैव साउंड स्लीप, उसके लिए जरूरी है कि 12:30 बजे सो जाएं, कि डीप स्लीप which is the last stage or deeper stage of non-rapid eye movement sleep that occur usually at 2 a.m. 2 बजे रात को आती है, और उससे 90 मिनट पहले सो चुका होना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि जब हम किसी को उठाते हैं तो कहते हैं ओ मैं ख्वाब देख रहा था। उसकी ख्वाब की वजह ये है कि वक्त के साथ साथ पहली बार रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कम होगा, फिर उससे अगली बार 90 मिनट थोड़ा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। सुबह के वक्त जब हम सो रहे होते हैं ज्यादा देर, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का दौरानिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बंदा ख्वाब देख रहा होता है। व्हाट आर इंसोम्निया? इंसोम्निया क्या है? दी अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन। स्लीप मेडिसिन में डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड होती है। मेरे एक स्टूडेंट आबिद मलिक ने भी इसमें डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड किया। उसने 5 डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड किए हैं, जिसमें स्लीप मेडिसिन भी है। The American Academy of Sleep Medicine define insomnia as unsatisfactory sleep that impact daytime function. This is very important कि वो गैर मुतमईन नींद जिससे अगले दिन का काम खराब। And more than 1/3 of adults report some degree of insomnia within a given year. अगर एक साल के अंदर, पिछले एक साल में हम पूछें एडल्ट से, तो उसमें हर 3 में से एक ने ये बताया कि मुझे नींद का प्रॉब्लम रहा। तो इसमें इसका मतलब इट्स वेरी कॉमन। मेडिकल कंडीशन इंक्रीजेस विद एज। तो मेडिकल कंडीशन इंक्रीज विद एज आर ऑफन एसोसिएटेड विद स्लीप प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज हैविंग आर्थराइटिस, उसको पेन हो रहा है या न्यूरोपैथी हो रही, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, अनईजी होगा। और खास हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दीज आर स्नोरिंग होती है। और न सिर्फ इसमें खुद नहीं सो पाता, बल्कि साथ वाले को भी प्रॉब्लम होती है। एंड वन ऑफ द सम ऑफ द स्टेट इन यूके इन वेस्टर्न कंट्री और कि ये स्नोरिंग जो होती है, दैट कैन बी ए रीजन फॉर डाइवोर्स। अच्छा अच्छा, the arthritis, and if there is vision problem, hearing loss, or
teeth problem, अगर किसी को दांत में दर्द हो तो he will not be able to sleep properly. And mental health, for example, depression में सो जाता है बंदा, लेकिन जल्दी अर्ली मॉर्निंग वेकनेस होती है, इसको कहते हैं कि लेट इंसोम्निया, while एंजाइटी में अर्ली इंसोम्निया होती है, बंदा सो ही नहीं पाता. So going to sleep is disturbed in anxiety, while early morning awakening is a characteristic, one of the characteristics of depression. If there is visual problem, there is vision problem, a chronic vision problem, then the person can have a poor quality of sleep. So what are the method of evaluating sleep disorder? Sleep diaries can be one method. इसमें बताते हैं जब आप सो जाते हैं तो, और अब तो खैर घड़ियां आ गई हैं और साथ साथ जो हमारे मोबाइल के अंदर सिस्टम है. Then history taking, physical examination, detailed sleep disorder assessment, और उसमें polysomnography करते हैं और मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट करते हैं, एक्टिग्राफी करते हैं. दीज आर वेरियस मेथड टू इवेल्युएट, जो कि यूरोपियन मॉडल में बहुत है. बट स्लीप इज रियली समंदर है जिसको अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं. व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ इंसोम्निया? मेल में ज्यादा या फीमेल में ज्यादा? तो देखा ये गया है कि विमेन्स आर 63% can have insomnia as compared to 54% of men. So which is very high. Insomnia is really a problem. So here you can see it is divided on the basis of age and institutionalization. 50% of the elderly experience poor sleep quality, while 94% of the institutionalized prescribed sedative hypnotics, 94% जो है जो दाखिल होते हैं उनको sedative hypnotic जो है anxiolytic या benzodiazepine are prescribed, and 30% of the adults experience symptom of insomnia. What is the prevalence of insomnia in Pakistan? An article published in the Journal of Pakistan Medical Association, 1 in every 3 suffer from insomnia in urban and semi-urban area of Pakistan. And 1/3 of those reporting insomnia takes a sleep aid generally prescribed by the family physician. अच्छा, हमने भी इस पे एक when I was the head of department, so हमने मुख्तलिफ लोगों को काम दिया. तो दौलत राम was given this task कि वो FCPS का dissertation इस पे करे, frequency of insomnia among medical student and its correlation with demographic variables. तो अगर आप ये देखें कि insomnia is very highly prevalent in medical student, and there is a need to develop some policy and strategy to minimize the effects. This was the dissertation. इसमें हमने जो है, if you look at this slide, कि हमने 1250 स्टूडेंट्स को अप्रोच किया और 300 टोटल 1250 था, इसमें 325 वर अप्रोच और 325 मेडिकल स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड. कोई जितने थे सबने क्वेश्चनियर दिया, जिसमें मेल 10% थे, अराउंड 11%, while 89% वर फीमेल स्टूडेंट्स. जो हमारे मेडिकल कॉलेज की सूरत हाल ये है कि फीमेल्स आर मोर. तो इसमें ये दिखाया गया कि मेल के अंदर 40% इंसोम्निया है, और फीमेल में इंसोम्निया 32 था, जो कि पहली वाली स्टडी थी उसमें ज्यादा, जो बार की स्टडियों में ज्यादा है. तो दीज आर दी वेरियस, और फिर खुद से चीजें इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल. कंट्रीब्यूटर टू द स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर के लिए जेनेटिक बेस भी देखा गया है कि देयर आर सर्टेन जीन व्हिच आर रिस्पांसिबल. एजिंग, elderly are more prone to insomnia. Menopause, hot flushes, हार्मोन की वजह से, और 1/3 of older adults have insomnia.
and more nocturnal awakeness, more pitfall sleep. So overweight, okay, weight is really a source of insomnia. 40% of those who are obese can have sleep apnea. तो sleep apnea is very common. असली बायोपेपर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है. Half of the people with diabetes will have sleep apnea. And asthma bronchodilator can cause insomnia. ये भी पता होना चाहिए कि there are certain drugs bronchodilators हैं या हमारी साइकेट्रिक की दवाइयाँ जो है वो स्लीप भगाने वाली होती हैं. जैसे ब्यूप्रोपियोन जो है अगर रात में लेंगे तो उससे नींद खत्म हो. अच्छा, पेन और इलनेस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, खास तौर पर अगर अल्सर है. एंड द सर्टेन मेडिकेशन जिसमें मिसाल के तौर पर मिथाइलफेनिडेट है जो बच्चों में देते हैं और अक्सर जो है नौजवान इसमें मिसयूज करते हैं रिटेलिंग के नाम से. जैसे नींद नहीं आएगी तो अच्छा पढ़ पाऊंगा, लेकिन वो उसके नुकसान बहुत है. एंड stress can contribute a lot. What are the various substance-induced sleep disorders? What are the substance that can antidepressant? पहले साइकेट्रिस्ट पे ये लेबल लगता था कि ये नशे की दवाइयां देती हैं, लेकिन लकीली एंटीडिप्रेसेंट द करंट और कंटेम्परेरी एंटीडिप्रेसेंट आर एक्चुअली स्टिमुलेंट टाइप की हैं जो कि नींद भगाती. देन एंटी-हाइपरटेंसिव, एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टिमुलेंट्स, ये जो है ना एंड क्रॉनिक. अच्छा, ये सिट्रोहिप्नोटिक कैन लीड टू स्लीप डिसऑर्डर, हाइपरसोम्निया भी कर सकती हैं, बल्कि रिबाउंड इंसोम्निया भी करती हैं. एंड कोलिनर्जिक ड्रग, cold preparation, alcohol, caffeine, opioid, amphetamines. Amphetamines are also stimulants. So how the technology can affect our sleep? Gadgets are keeping you awake. ये जो सेल फोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, और खास तौर पर जो है they produce blue light. That blue light can suppress melatonin and leading to the blue light are usually emitted from cell phone, computer, and tablets and television. Uh, they restrain the production of melatonin, the hormone that controls the sleep-wake cycle or circadian cycle. So reducing melatonin make it harder to fall and stay asleep. And make your bedroom technology free zone. Whenever you want to have proper sleep, the bedroom should be free of the gadgets, electronic device, especially mobiles and computer and TV. So what happens when you don't sleep? What happened? Lack of sleep has serious effect on brain's ability to function. If not slept for a night, for long after effect can occur, and unsteady irritability, forgetfulness, poor attention and concentration. इसलिए जो देखा गया है कि जो डॉक्टर जो ड्यूटी करते हैं एक्स्ट्रा, they are leading to inappropriate decision. Similarly, जो नाइट शिफ्ट वाले लोग होते हैं और खास तौर पर एयरपोर्ट्स पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले, इनके अंदर बड़े प्रॉब्लम. During continued lack of sleep, the part of the brain that control language, memory, planning, and sense of time is severely affected, particularly shutting down. इनको अंदाजा नहीं होता कि टाइम क्या है, ये लैंग्वेज में डिफेक्ट होगा, मेमोरी में, प्लानिंग में. In fact, 17 hours of continuous sleep lead to a decrease in performance, and that is equivalent to a blood alcohol level of 2 glasses of wine. ये एक रिसर्च की गई कि 17 घंटे तक मुसलसल बंदा न सोए तो उसकी जो एफिकेसी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो जाती है 2 गिलास शराब के लिए. अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा गया ये है
अभी तक जो करंट रिकॉर्ड था वो 11 दिन का एक बंदे ने, रेंडी गार्डनर ने 1965 में बनाया था, जो अब तक नहीं टूट सका। 11 दिन तक वो उसने न सोने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 4 days into the research he begins hallucinating। चौथे दिन जब तक वो नहीं सोया तो उसने अजीब अजीब आवाजें और शक्लें नजर आ रही थी। उसके बाद ही डेवलप्ड एबनॉर्मल बिलीव डिल्यूजन and he thought he was a famous football player, actually he was not। तो ये जो है, and surprisingly Randy was actually functioning quite well at the end of his this research। और वो जो है अभी तक जो है वो अच्छी तरह से जो है पिन बॉल को हिट कर सकता। दैट वाज, ये कुछ चीजें तो ठीक होती हैं, लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर डिस्टर्ब अ पर्सन डेवलप हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन व्हिच आर एबनॉर्मल बिलीव व्हेन हेलुसिनेशन आर false perception। अच्छा, पुअर फंक्शन जो है क्या होता है, ड्राउजी ड्राइविंग, speed driving, deprived, sleep deprived people can have up to 4 times greater risk of accident। तो इस पे ये सवाल आ सकता है कि 2 से 4 गुना ज्यादा करते हैं ये स्लाइड। एंड देयर आर अराउंड 100,000 road traffic accident as a result of poor functioning due to disturbance of sleep, and 1,000 injuries and 1,550 death has occurred as a result that are totally related to sleep deprivation। 20% all driver have dozed at least once behind the wheel। इसमें इसीलिए यूरोप में if there are problem, उन्होंने क्या किए हैं कि रोड के बीच में वो ऐसे खुरदार जगह बनाए हुए हैं कि जब गाड़ी वहां से गुजरे तो बंदा अगर सो रहा है तो जाग जाए। 1 night of sleep deprivation is equal to intoxication। अच्छा, दुनिया में बहुत बड़े खतरनाक वाकयात जो हुए हैं दैट हैज, अच्छा, ऑन वन हैंड देयर वर पीपल like Napoleon and they slept for 4 hours a day, 4 घंटे। And Thomas claimed that sleep was a waste of time। That means कि अगर कोई नहीं सो पा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो अक्सर ये लोग बड़े परेशान होते हैं। मेरे उस्ताद जो थे एक बांग्लादेश के हमारे प्रिंसिपल, वो भी किसको भी नींद नहीं आती, तो मैं उसको कहता था आपकी 3 जो है जो लाइफ है वो बढ़ गई है, कैसे स्लीप में जो 1/3 लाइफ गुजर रही थी वो नहीं जाया हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया है कि स्लीप डिप्राइवेशन से बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं, और दुनिया में बड़े बड़े जो वाकयात हुए थे वो स्लीप से रिलेटेड। व्हाट आर द हेल्थ कंसीक्वेंस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप? कार्डियोवास्कुलर में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, increased risk of heart attack, stroke। 5 or fewer hours have 45% of great risk for heart attack and stroke। Endocrine, it affects appetite, regulating hormone, diabetes, impaired glucose tolerance। This is very interesting कि somebody is having diabetes 2.5 times more with 5 or less hours sleep जो है उसकी डायबिटीज के इम्कानात जो डिस्टर्ब हो, अनकंट्रोल होगी ग्लूकोज। और अगर 6 घंटे से कम हो तो देर आर 1.7 times disturbance of glucose intolerance। Impaired glucose tolerance, glucose tolerance is a test that is done for the confirmation of the diabetes or detection diabetes। तो इसमें ये देखा गया है कि 5 घंटे से कम सोएंगे तो 2.5 गुना इम्कान है कि ये खराब हो, और अगर 6 घंटे से कम सोएंगे तो 1.7 टाइम्स इम्कान है कि वो ग्लूकोज टॉलरेंस खराब हो। Obesity and weight, high weight is associated with this as a consequence of the sleep disturbance। Increase
in stress hormone. ये endocrine disturbance है. Thyroid and growth hormone are affected as a result of health consequences of disturbance of sleep. Immune system, ये बड़ा important था कि make the person susceptible to illness. So this can be one of the BCQ. The health consequence of sleep disturbance can be in the form of, जो कि जवाब सही वाला होगा, immune system suppression. Now, what are the nervous system effect on the nervous system, memory and learning? इस पे क्या effect है? Balance is affected. More fall जिसमें होती है, जैसे up to 4.5 greater chance of falling. Increases of tremors and seizure. ये भी हम सिखाते हैं उसको कि जो लोग जिनको एपिलेप्सी है उसको कहते हैं कि आप खासतौर पर बुखार से, बेख्वाबी से बचें. अगर कम सोता है तो उसके न्यूरोनल डिस्चार्ज में फर्क आ जाता है. Therefore, one of the strategy to control epileptic fit seizure is to have proper sleep. Increase in pain and frequent of headaches होते हैं. Mental health में क्या है? Decrease neurotransmitter affecting mood or emotion, and more distress, irritability, depression, alcohol use, and suicide are more recorded in a person as a health consequence of the disturbance of sleep and decreased quality of life. Early a death के से क्या relationship है? Less than 6 hours of sleep per night. It has been associated with up to 30% greater risk of dying regardless of cause, any cause. बाकी cause को उन्हें control किया तो 15 से 30% इम्कान जल्दी मरने के. And protective factor of avoiding tobacco, alcohol, and healthy food with sleep deprivation. Now, what are the treatment of insomnia? Non-pharmacological and pharmacological. Non-pharmacological must be used first. और इसमें जो है वो तकरीबन 16-17 पॉइंट्स हैं. और फार्माकोलॉजिकल तो लोग फौरन दवाई देते हुए. In our countries, the most of the drugs used for insomnia are available over the counter. Sleep hygiene का concept है. उसमें सबसे पहले cognitive therapy करते हैं कि involves identify dysfunctional belief and attitude about sleep and replacing with more adaptive. सोच को ठीक किया जाए तो कहते हैं कि ऐसे नींद का मतलब ये है, उसका मतलब ये है. अच्छा, स्टिमुलेंट कंट्रोल होना चाहिए, बेडरूम के अंदर गैजेट्स ना हो, और स्लीप restriction, containing the amount of time spent in bed to increase the percentage of time sleep. इसमें ये भी है कि one of the therapy जो उसको नींद नहीं आती थी उसमें स्लीप डिप्राइवेशन भी करते थे कि उसको सोने नहीं देते थे. सोने तो 2 दिन तक नहीं सोता था तो लगातार फिर सोने लगा. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इज अ टेक्निक जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू रिलैक्स. And then with imagery training or meditation are intended at lowering pre-sleep cognitive arousal. जो उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं वो खत्म हो जाते हैं जिसकी नींद आती है. This is the sleep hygiene. इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम ऊपर से देखें कि appropriate water, relaxation exercise, spending time outside ताकि sun exposure हो, read a book, और have an early light dinner. Light dinner हो और जल्दी हो, और खास तौर पे 6, 7 और 8 बजे तक. Stays indoor all day and do no exercise. This is इसको ठीक करना है. Stress and anxiety को कंट्रोल करना है. ये नीचे वाली जो है जो रेड है, ये जो है इसको काबू पाना है. यूजिंग ऑफ टैबलेट एंड फोन्स कम होने चाहिए. मुसलसल बेड में नहीं सोना चाहिए. यहीं पे जरूरी है कि
वी यूजुअली टीच कि बार बार ना कहा करें कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज इफ यू थिंक यू आर बिटन यू आर। अगर आप बार बार कहेंगे मुझे तकरीर करना नहीं आती, तो नहीं आएगी। एंड देन गोइंग टू बेड व्हेन यू आर नॉट टायर्ड, ये भी नहीं होना चाहिए कि जब आपको नींद आए तब जाएं। देयर आर एक गोल्डन रूल ये भी है कि इफ यू आर नॉट हैविंग थर्स्ट, तो आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन आपको भूख न लगी हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी ना हो। अगर ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, या तो बहुत गर्मी हो या बहुत ठंड हो, उसमें भी नहीं आती है। एंड देन कॉफी, चॉकलेट एंड कोल्ड ड्रिंक और इसके साथ साथ चाय, दीज आर ऑल स्टिमुलेंट कैन डिस्टर्ब द स्लीप। इसमें ये हाउ टू इम्प्रूव स्लीप नॉन फार्माकोलॉजिकली, लिमिटिंग डे टाइप नैप टू 30 मिनट। कहते हैं 20 से 30 मिनट की नेपिंग जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्पेशली इन मेल। फीमेल में तकरीबन 34% रिडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर है, जबकि मेल में 68% रिडक्शन है, अगर 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक कैलूला किया जाए। Avoid stimulants such as caffeine, nicotine, exercising, खासतौर पर इवनिंग की एक्सरसाइज प्रोमोट स्लीप क्वालिटी। खासतौर पर एरोबिक एक्सरसाइज जो है 10 मिनट्स तक, दैट कैन आल्सो इम्प्रूव द स्लीप साइकिल। अच्छा, ये भी देखा गया है कि सोने से पहले अगर आप शदीद एक्सरसाइज करेंगे, दैट कैन आल्सो लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। Heavy or rich food or fatty or fried food at night, or carbonated drinks, then can trigger indigestion for some people and leading to poor quality of sleep. And ensure adequate exposure to natural light, especially in the evening, जिससे जो है वो मेलाटोनिन की सप्रेशन हो और रात को वो उसकी सिक्रीशन शुरू हो। And most important thing is establishing a regular रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वर्जिश करें। दिस आई हैव रिटन, स्लीप मैनर का जो एक वो है, इसमें ये बताया गया कि इस्लाम में जो है किस तरीके से राइट साइड पे सोना है, अर्ली बेड टाइम, अर्ली वेक टाइम, ये जरूरी है। और परफॉर्म वुजू बिफोर गोइंग टू बेड, डस्टिंग एंड क्लीनिंग द बेड, ये भी बड़ा जरूरी बताया गया है। और उसको आजकल साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे जो जिस्म से कुछ जो है चीजें निकलती हैं, जिसमें डीएनए वगैरह, वो उसको अगर झाड़ दिया जाए, इसकी वजह से नींद ठीक हो जाती है। हमने अपने तौर पर ये बनाया था कि सुकून नींद के उसूल क्या हैं। पहला उसूल है नींद का माहौल, जिसमें आरामदा और यकसा माहौल, अंधेरा और खामोशी, और इसके साथ टेम्परेचर मुनासिब टेम्परेचर हो। कुछ चीजें हैं जो नींद को प्रमोट करती हैं, मिसलन हमेशा मुकर्ररा वक्त पे सोएं उठें, बिस्तर पे जाने से कबल मसाइल में न उलझें, रोजाना पाबंदी से वर्जिश करें, खास तौर पर इवनिंग की वर्जिश। और कुछ चीजें हैं ये परहेज अवॉइड करने, बस बिस्तर पे जाने से पहले जज्बाती होना, सूरज गुरूब होने के बाद वर्जिश करना, शाम के बाद चाय कॉफी अगर पियेंगे उससे परहेज होने चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, पान, नस्वार, गुटखा वगैरह ना लें, दिन के वक्त ज्यादा न सोएं, कैलूला शुड बी लेस देन 30 आवर्स, रात के वक्त ताखीर से और ज्यादा खाने से परहेज, और ज्यादा देर बिस्तर पर लेटने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चाहे आपको नींद आए ना आए, सुबह वक्त पे उठें कि अगले दिन का कोटा खराब ना हो। रात नींद ना आने पर भी सुबह वक्त पर उठें, ताकि नींद की तरबियत मुतासर ना हो, और दिन के औकात में रात को नींद ना आने पर परेशान ना हो, बार बार उसका जिक्र ना करें कि मुझे नींद नहीं आती, फिर नहीं आई। और ये एक इस्लाम में एक वो है, इसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम लेकर मरता हूँ और जीता हूँ।
This is the dua for sleep. Now coming to the treatment disorder जो है obstructive sleep apnea के लिए mouth appliance है, surgery of the tonsil and adenoid, weight reduction of obese person, and continuous positive airway CPAP जो है ये बड़ा आजकल रिवाज है. The pharmacological treatment 19th century, alcohol and opioid were used as sleeping medicine. This opioid को even in our country 1968 तक जो है promote करते थे perfume होगा narcotic. In 19th century, carbohydrate was used and misused in combination with alcohol. तो उसको कार्बोहाइड्रेट को अब हटा दिया और उसमें खास एक मुसीबत थी कि अगर आप इसको ये प्लास्टिक सिरिंज में डालते थे तो वो प्रेसिपिटेट होकर नुकसानदायक हो जाता था, तो उसको सिरिंज में डालना होता था, ग्लास सिरिंज. Barbiturates were used at the early 20th century until 1960 when benzodiazepine receptor जो है वो FDA ने अप्रूव किया. उससे पहले जो है ये फ्लोराजिपाम और उससे पहले बारबिटूरेट इस्तेमाल करते थे which were having a lot of issues especially in pregnant women. These are the various drugs that are used: first generation, second generation, third generation, and others. First generation में बारबिटूरेट, carbohydrate, glutathione ये थे, अभी they are no more used. Then nitrazepam and just diazepam, velorazepam, midazolam, ये सारे आ गए. Third generation ना zolpidem, zopiclone, zelpiton, these are the actually जो Stilnox और इसके नाम से available हैं. These are hypnotic drugs. And other drugs, antihistamine, particularly promethazine. Promethazine can be used in even women's. Antidepressants such as mirtazapine and trazodone, these are also having heavy sleep, so therefore they are used for insomnia. Insomnia में जो है quetiapine or Qsil is used and melatonin these days are also used, जो कि somno के नाम से available. With this, I think the beginning of health is sleep. Disease and sleep keep apart. तो ये एक है कि early to bed and early to rise make a person healthy, wealthy and wise. So sleep is really अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक है. So this was about. तो अभी हम इसको थोड़ा सा हमने आज जो किया इसको हमने पहले पेन पहले डिस्कस किया और पेन के जो है 3 टाइप्स डिस्कस किए: एक्यूट क्रॉनिक एंड एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेन. देन उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस की. उसके बाद में हमने पेन की ट्रीटमेंट बताई, किस तरह से असेस किए जाए, ट्रीट किया जाए. दीज आर दी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ये बताई हमने. उसके बाद में कॉन्शियसनेस डिस्कस की, जिसमें 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉर्मल, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड कोमा डिस्कस किया. फिर हमने ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्कस किए, ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, असेंडिंग प्रोजेक्ट एंड सो ऑन. इसके बाद में हमने रेटिकुलर सिस्टम को डिटेल में हमने डिस्कस करके फंक्शन, इसकी जो मेन फंक्शन 3 है रेटिकुलर सिस्टम के: एक स्लीप वेक स्केड्यूल जो है, स्लीप वेक रेगुलेशन, तीसरा अटेंशन, तीसरा लर्निंग है. दीज आर दी वेरियस एस्पेक्ट. देन हमने स्लीप की बात की कि इट इज a recurrent altered state of consciousness that occur for a sustained period to restore physical and mental health. इसमें हमने डिस्कस किया कि न्यू बॉर्न्स रिक्वायर अप टू 19 इवन 17 स्लीप, बट 19 से ज्यादा स्लीप बच्चे निश्चित करेंगे दैट कुड बी not recommended and that can be damaging. While for adults जो है less than 6 hours and more than 10 hours sleep is not recommended.
और ख़ास तौर पर जो है जो ओल्डरली लोग हैं उसमें लेस देन 5 hours एंड मोर देन 9 hours आर नॉट रिकमेंडेड। फिर हमने ये देखा कि वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोग कम सो रहे हैं और अभी नई रिसर्च की जाए तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग कम सोते हैं हमारे। देन वी डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। उसमें फिर मेलाटोनिन का हमने तरीका बताया। फिर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो 70 to 80% है, जो कि शुरुआत में दे आर इन स्टेज 4, 4 स्टेज में होते हैं। इंसोम्निया को हमने डिस्कस किया और these are what are the physical condition that can lead, तो उसका जवाब फिर यही होगा सिंगल बेस्ट में कि जिसमें आर्थराइटिस और है या ओबेसिटी है एंड प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ है। Women are more suffering from insomnia 63% एंड जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको 94% को हिप्नोटिक दवाइयां दी जाती हैं, ट्रीटमेंट दी जाती है फॉर इंसोम्निया। तो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंसोम्निया, जेनेटिक, एज रिलेटेड, ओबेसिटी, physical condition especially diabetes, and pain in the body, medication and stress. These are the various medication group of medication which can lead to uh, uh, sleep disturbance. फिर हमने ये बताया कि रेंडी गार्डनर ने 11 दिन तक रिकॉर्ड किया, लेकिन 4 day पे ही वो अपने आप को फुटबॉलर समझने लग गया और ये देखा गया कि दुनिया में बड़े बड़े वाकयात जो हुए हैं वो that has been associated with स्लीप प्रॉब्लम। और स्लीप प्रॉब्लम पे जो स्टडी की गई है कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन पे, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड अर्ली डेथ से भी रिलेट किया गया है। ट्रीटमेंट में हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल बताया, फार्माकोलॉजिकल बताया। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमने जो स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट दिया और फार्माकोलॉजिकल में ये दवाइयां जो है जो कि फर्स्ट जनरेशन तो खत्म हो गई और देवर डेंजरस, और अब जो है इसमें पाम आता है, लोराजी पाम, क्लोनाजी पाम, ऑक्साजी पाम, एंड देन द थर्ड जनरेशन जो है वो भी है। With this I'll end my talk. मेरा ख्याल है आज समझ में आ ही गया होगा और if there is any question you can ask. Chat box में let me see any question. अच्छा ठीक है, अपलोड ठीक है, ओके। और अटेंडेंस ले ली गई, ठीक है, ओके। तो अजान हो रही है मेरे ख्याल में, हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और दिस स्लीप का जो एरिया है दैट इज इम्पोर्टेंट, 1/3 ऑफ लाइफ वी स्पेंट इन स्लीप, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग स्लीप मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। ओके, हम ये करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट।